So Hajra, you mashallah have a grown-up daughter. Now she's married, and a son who's 18. Masha, almost. Yeah, He'll and be like, then Mom, almost. and then you're a single parent. So Yes, you know, single a parent. lot of women in these situations would want कि अच्छा वो बेटी अगर लाहौर में रहती है तो वो रोज आए मिलने, या वो Interesting बेटा topic. जो है वो शादी मतलब you know with single boys, हाँ. I think I've seen this कि वो तो expectation नहीं, वो given है कि बच्चे ने माँ के साथ ही रहना है, especially if she doesn't if she's a single woman, लेकिन Yeah. या parents के साथ रहना है. A single boy does not have the option in Pakistan to say कि नहीं, I would like to live by myself. If he does, then there's a lot of guilt and a lot of burden. But you don't seem to agree with this. Okay, let me just say one thing first. I'm a Malang at heart, so I'm going to, and I'm a yogi, I'm a Malang, so I'm going to say one thing very clearly. हम इस दुनिया में सिंगल ही आते हैं और सिंगल ही जाते हैं. So ये तो चीज़ को आप अपनी ज़िंदगियों में ना एक्सेप्ट कर लें सारे, कि सिंगल ही है सब कुछ. ये जो आपकी सोशल बॉन्डिंग है अपने खावन के साथ, या सोशल बॉन्डिंग है अपने बच्चों के साथ, या जिसके साथ भी, ये दुनियावी है. ये सब इट्स देयर राइट नाउ, इट्स राइट हेयर. हर किसी के कितने सारे कपल्स जो हैं उनके 4 शादियां हो रही हैं, 2 शादियां हो रही हैं, ख़वातीन की, आदमियों की, बंदों की. डू नॉट टेक अ रिलेशनशिप विद एनीवन एज अ लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी. पहली बात तो ये. तो फिर आप अगर सिंगल माइंडसेट के साथ ही ज़िंदगी में चलेंगे तो आपको एक्सपेक्टेशंस लेवल कम होगा. आपने कहा है कि आपने बच्चों की शादी हो जाती है. हमारे जनरेशन में और पहले की जनरेशन में ये फ़र्क है कि हमारी मदर्स ने, और उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने अपने साथ जुल्म किया कि वो सारा दिन बैठ के बच्चों पे डिपेंड करना है कि जी ये बच्चे आएंगे तो हमारी ज़िंदगियों में कोई हलचल होगी. माई पेरेंट्स आर ओल्डर. They are way too dependent on waiting for all of us to come home and for the ronak and for the gupshup and all of that. They are now. हाँ, of course. They're older. They were very, they were like living their own life. But mashallah, I mean, and, you know, they're both there, which is amazing. Allah unko sehat zindagi de. But they're always looking towards the kids. And then I was traveling the West. मेरी शायद thinking क्यों हल्की सी आपको off beat लगेगी यहाँ पे. Why I say I'm a Malang, मैंने बहुत ट्रैवल किया है बिकॉज ऑफ माई वर्क. मैंने बहुत दुनिया के अंदर जाके बिज़नेस किया है, काम किया है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन काइंड दैट आई वाज एबल टू डू इट. और मैंने खुद जाके किया है, कुछ 4 ख़ानदान के लोग साथ ले जाके नहीं किए. एंड आई लर्न फ्राम अदर कल्चर्स, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद न्यूयॉर्क रही हैं, कोलंबिया से पढ़ी हैं, लेकिन आपकी बहुत ट्रेडिशनल थाट है. और मैंने सिर्फ इस ट्रैवलिंग की वजह से, तो आई थिंक हम कुछ ना कुछ सीख कर रहे होते हैं. आई वॉज सीकिंग समथिंग. आई वॉज सीकिंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी सर्वाइव बाय आवरसेल्व्स. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ. दैट आई फील कि आपके बच्चे आपके लिए एक अल्लाह करे कि हमारे बच्चों के दिलों में काइंडनेस हो फॉर अस एज वी ग्रो ओल्डर, एम्पैथी हो एज वी ग्रो ओल्डर. बट आई डोंट थिंक that we need to depend on our children. सारी दुनिया की ख़वातीन और मर्द अकेले घरों में रह रहे होते हैं. Both my kids, from both my kids, I have no expectations. I want them to do well. I want them to be happy, healthy, have a good life. And they're extensions of us, Ayesha. They are not, you know, we don't need to captivate them in our own lives. We have to let go. I am obviously going to have my tough time as an empty nest. जब जैसे ही बच्चे आपके यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, शादियां करके चले जाते हैं, कि empty nest syndrome तो सब पे आता है. So उस empty nest syndrome के लिए I have tried my best to learn new skills, get myself busy. Yes. I have started venturing off into, other than being a designer at Hajra Hayat studio, I've just, mashallah, last year opened up another business which is a multi-brand store. The reason was to work with other people. Yeah. Now when I work with other people and I meet other women, suddenly there is, हम ना actually we are spiritual beings. हम spiritual beings को connection चाहिए होता है. Yeah. End of story. Human beings have to live in communities. Communities. We can't survive Thank you. alone. So when we have connection, इसलिए moon पे कभी नहीं. Humans पहुंच जाएंगे, कदम रख लेंगे. हमारा हम तो पता नहीं, अल्लाह करे पहुंच जाए ईंधन, फ्यूल और लाइट लेके. लेकिन ये कि whatever it is, हम लोग आई जस्ट थिंक स्पिरिचुअल बींग्स हैं हम, तो हमें कनेक्शंस चाहिए होते हैं. सो आप वो कनेक्शन अपने काम पे भी निकाल सकते हैं, काम पे भी ढूंढ सकते हैं. गेट योरसेल्फ बिजी. आप अगर हाउस वाइफ भी हैं, जो किड्स हैव ग्रोन अप, स्टार्ट सम वर्क. मैं तो इतनी खुश होती हूँ देख के भाई. मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज वो सोशल एडवर्टीजमेंट हो जाती है. देयर इज़ एन ऐप जहाँ पे आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं. सो आई एम सो सुपर प्राउड ऑफ पाकिस्तानी वुमेन
कि 70-60-year-old आंटीज़, मैंने बीच में काम में कई दफ़ा ऑर्डर करना हो, मैं ऐप पे जाके ऑर्डर किया तो घर का खाना, मैं बैठी काम पे, मैं दिल कर रहा है कुछ घर का खाऊं, मेरा नहीं दिल कर रहा, और मेरा घर जो है थोड़ा सा जाना पड़ेगा लेने के लिए, या उस दिन पर्टिकुलरली कुक ऑफ है, नहीं खाना आ सकता. सो मैंने 1-2 दफ़ा कॉल्स की और मतलब मैसेजेस किए, ये किया और नंबर्स लिए, कुछ मुझे पता चला और तो घर का खाना मंगवाया. वेरी नाइस. पता लगा कि एक सिस्टम बन गया हुआ है कि अब उन ऐप्स के ऊपर सिंपल हाउसवाइफ्स अपने घरों से अपने चूल्हे पे से खाना पका के वो उस ऐप पे से भेज सकती हैं. इट कैन बी दाल, इट कैन बी चावल, इट कैन बी एनीथिंग. So that's how I feel so proud. Yes. Acha, I get my kicks like this. So I am working in this multi-brand store. So ever since your children have become older, I have become very busy. You've become even busier. Alhamdulillah. So along with Hajra Hayat, you're now doing this multi-brand store. And I'm meeting designers all the time. I'm meeting young women, older women. Real estate project. Yes, and now I'm you were telling me that मैं एक और भी चीज करना एक और मेरी जानने वाले हैं, उनके साथ I'm thinking of joining hands with a person. उनके ऐप एक खोल रहा है, उसके साथ it's very futuristic. My point being कि दुनिया से तो जाना ही है भाई एक दिन, वो तो सभी ने जाना है. सो वाई, वो मैंने बोला ना आपसे कि स्पिरिचुअल बीइंग होना, थोड़ा सा कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग रखना, थोड़ा सा ज़रा अपना जैसे जैसे यू ग्रो ओल्डर, यू डोंट हैव टू प्रीच, बट यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस विद इन योर सेल्फ. आप मुझे पूछ रही थी शाम को क्या करते हो, तो मेरी जो शाम की रूटीन है वो होती है कि खाना खाओ और सो जाओ. बिकॉज to be honest, और क्या पूरा दिन इतना busy और भाग दौड़ में गुजरते हैं. And I've met so many people the whole day. Now I can at night just stalk my favorite people. On Instagram. Yeah. And I'm not going to tell that I have hidden accounts. So I stalk my favorite people and then I go to sleep. And have dinner and go to sleep. Yeah. Acha, but Hajra, tell me, like, I mean, moving forward, do you not feel the pressure that I need to settle down? I need Oh to no. Oh my God. What is settling down? Let's just talk on this podcast. For the life of us. Do people ask you? For the life of us human beings. I said, but first tell me, what are the weirdest questions people have asked you? What you just asked. Really? They're like, you're weird. I'm weird. Scary. Where are you settling down? Bro, I am settled. How settled do I want to be? Would be कि hi बेचारी. हाय बेचारी. ये नहीं प्लीज कहें, मुझे और दुआ चाहिए. आई लव इट, प्ले डाउन. आई मीन कम ऑन. मुझे इतना मज़ा आया एक दिन कि मुझे कभी किसी ने एम्पथाइज ही नहीं किया. मैं कॉलेज में थी, आई वॉज डूइंग सो वेल, आई वॉज ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, सब मेरे जेलस. अच्छा, आई वेंट इन टू वर्क. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत मेहरबानी रही. भाग दौड़ में काम, मेहनत बहुत की है भाई, 16-16 घंटे काम करते रहे. लेकिन दूसरों को दूर से सिर्फ शाइनिंग स्टार्स नज़र आते हैं, उनको भाग दौड़ नज़र नहीं आती है. सो आई एम कम्प्लीटली ओके. किसी ने कहना ओहो आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ, ओहो आजकल मंदा चल रहा है, काम नहीं ठीक चल रहे हैं, पाकिस्तान में तो बिजली नहीं है, आप सिंगल पेरेंट इश्यूज़ तो नहीं है, ये क्या. आई एम टेकिंग इट ऑल इन एज लाइक प्लीज़, हाँ जी दुआ चाहिए आपकी. दुआ चाहिए. सो आई मीन लाइक कम ऑन मैन, आई मीन लाइक यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल yalla, like what is settle down? What is it? Tell me. As settled as a humanly possible a person can be, I am subhanallah very settled. As settled a human being can be. हाँ, आप जो दूसरी बात कर रही हैं वो ये है, to have a life partner who's compatible with me in my own vibe, in my own zone. So that is something जो कि अगर कोई important या कोई रास्ते में इस किस्म की कोई चीज़ आई जहाँ लगा कि यहाँ वाइब्स करेक्ट हैं, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर भी मैं 100 दफ़ा इस चीज़ को सोचूंगी. बट प्रेशर, नो प्रेशर. मेरे पे प्रेशर ये ज़रूर है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो जाए, और ये प्रेशर ज़रूर है कि पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ जाए, ब्राइडल की कीमत नीचे कर दें आप. हाँ भाई, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, वर्कशॉप में जनरेटर चलाने पड़ते हैं. हमारे पे ये प्रेशर्स हैं. ये प्रेशर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये प्रेशर्स रियल हैं. ठीक है, इनको अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है. ये क्या प्रेशर है कि सेटल डाउन, ये क्या अचीवमेंट है? इट्स नॉट एन अचीवमेंट. it's a thing that's happening in the side of your life. It happens, it doesn't. It's not an achievement. Bro, there are so many women out there जो they're above their 30s 40s वाला years and they are not married. And there are so many men I know
who don't want to get married. किसी का अगर नई शादी चली तो उसके बाद they don't want to get married. और किसी का ये कि उन्होंने शादी ही नहीं की. Yeah, absolutely. ये क्या ये कोई end of life नहीं है. हमने शादी को बहुत बड़ा big deal बना ली है. Yeah. And it's not an achievement. I think it's so important. It is not an achievement. It's just I don't know, like growing older is not an achievement. It happens. It happens. So I feel if you meet the right person or for whatever reason. And if your spouse is somebody, औरत का या मर्द का, who's super affluent and has a lot of, dough, subhanallah for that, but it's not an achievement. Especially if it's not earned but inherited. फिर तो बिल्कुल भी achievement नहीं. It's your dad's achievement, but it's not an achievement. But what is your achievement? Let's for a what you have contributed. But एक second के लिए, my Malang self would like to say something here. हम अपने achievements का perception अगर clear करें, तो achievements अपना वो है ना regulatory, अपना relative to what you think. We've become so materialistic that we've started constantly talk about achievements as कि check marks क्या हैं. भाई लाइवलीहुड क्या है? नहीं यार, ये नहीं है अचीवमेंट. ये तो हर बंदे के पास कोई ना कोई तो होगा ना. जिसके पास साइकिल भी है वो भी कम्यूट ही कर रहा है. ये कोई अचीवमेंट नहीं. अचीवमेंट क्या है मेरे हम्बल ओपिनियन में? आई एम जस्ट द पर्सन हु आई, दिस इज़ हु आई एम. आपका लाइवलीहुड, आपका रिस्क, आपका सबसे पहले आपका पीस ऑफ माइंड है. आपका वेल्थ आजकल आपका हार्ट एट ईज़ है. आपका कनेक्शन विद योर लॉर्ड है. आपके पास अगर आप हैं प्रैक्टिसिंग पर्सन, अप टू एवरीवन, इट्स नॉट माय बिजनेस टू कमेंट ऑन दैट, बट अगर आप प्रैक्टिसिंग पर्सन हैं तो आपकी 5 वक्त की नमाज की प्रैक्टिस है. वल्ला, दैट मीन्स यू आर, दैट्स एन अचीवमेंट. अगर नहीं है, ठीक है, आप प्रैक्टिसिंग नहीं है, बट अगर आप कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, दैट्स एन अचीव. ये कोई अचीवमेंट नहीं. आयशा, आई एम जस्ट नॉट दैट पर्सन एनी मोर who would think कि यार ये बहुत बड़ा, किसी का विला बहुत बड़ा है. ट्रस्ट मी, उस विला में अगर वो इंसान अकेला है तो उसको जाके पूछो कि वो कहेगा कि गिव मी दैट रोड साइड बंदा बिठा कर खाना खिलाने वाला. आई एम सो डन. और अभी ये बोल रही हूँ तो सारे कहेंगे रियली, बट हे, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट हियर. वी ऑल नीड टू पे आवर बिल्स. We all need to pay our, buy the food. So we all need to work. There is no, I'm not saying, go and sit under the tree and pray to the Lord for Mansalva. But I'm just saying, do your best, but stop finding achievement in materialistic things. Yeah. आधे से ज़्यादा से क्या, मेरे ख्याल से 90% प्रॉब्लम्स ही सोसाइटी में इसलिए इस वक्त हैं बिकॉज हर कोई जो है वो इन्हीं चीज़ों के अचीवमेंट समझने लग गया. Absolutely. To me, achievement is your impact. Okay, because you have very little time in this world. What impact have you created? Amazing. That's an interesting one. Yeah, to me that's achievement, because whatever you've earned will stay here, but your impact will outlive you. That's a fantastic thing to say. I think fantastic thing to say, because which is Kamal why, aapne baat ki hai. When I moved from medicine towards journalism, and people were like, "Why did you?" And I realized that I wanted to create impact. So the written word, if written well, or a book, like if you look at Arundhati Roy, her book, like I love her books, but her books are her impact, right? And whether she dies today or 10 years later, the books will remain her That's impact. an impact. That's an achievement. I feel when we talk not how well the book sold, but the fact that people read it and they learned something from it. And what the conversations the book created. It's not, impact isn't linked to money, right? I don't know if she made much money from the book or she didn't. But the book created conversations. The book created so many other like Michael Jackson. The us din mujhe Sharan, he's like 7. I really like that child of yours. Yeah, so Sharan wasn't. Sharan wasn't alive when Michael Jackson. When we were all Michael Jackson fans, right? Yeah. But us then, I don't know how he saw a video of Michael Jackson and he came to me and he's like, I love this man. I want to go meet him. I want to go to his mansion. I want to see him. Can he teach me how to dance? And I was thinking that Michael Jackson, for all the confusions and controversies, that is his impact. That a 7-year-old today, like Sharan, every time he dances, he's like, I want to dance like Michael Jackson. That's the impact that man created. And also the happiness. And obviously, the joy. Positive, negative, dono ho sakta hai.
But अगर किसी look at the impact our prophet created. There you go. For There you go. centuries and generations, There people you want go. to be like him. They want There you go. to talk like him, walk like him, wear Yeah. the clothes he wore. That is impact. So, That is legacy. अगर अब ये आप- कोई नहीं बैठ के discuss करता कि was our prophet rich. No way. Because वो you know वो हाँ, लेकिन impact- एग्जाम्पल के लिए बहुत सी But चीजें आप डिस्कस होती philanthropy हैं. discuss करते हैं. Like Bill Gates was rich. वो इतना नहीं लोग discuss करते हैं. What do people talk about? The impact of the Melinda and Bill Gates Foundation. Absolutely, and also the fact that इधर में I like to add something कि हम बहुत से लोगों की ज़िंदगी को इंस्टाग्राम पे देखते हैं और स्पेशली सोशल मीडिया पे देखते हैं, just to put it out there कि सोशल मीडिया मेनली, और हम समझते हैं कि wow they're living the life. हम ये नहीं समझते, हम सोचते ही नहीं है कि how वो किसी बहुत से ज़रूरतमंद लोगों की बहुत सी ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होंगे. उनकी बहुत सी चीज़ों का टेक केयर हो रहा होगा, तो ही उनको अल्लाह ताला ने इतना ब्लेस किया होगा. सो वी ऑलवेज हैव टू लुक एट द हाइंड साइड के पीछे कौन क्या कर रहा है. सामने बैठ के मे बी वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट एंड यू नो वी लुक अ सर्टन वे कि भाई यू नो ये इस तरह से बैठ कर आराम से ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. कोई हो सकता है सोचे कि इनको क्या मालूम. जब हम अपने वर्कशॉप्स पे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, एंड आई नो यू आर हार्ड वर्कर एज वेल. सो गर्मी, सर्दी, धूप, पसीना, हर चीज़ में से गुजर के ही कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पहुँचे हैं. सो देर इज़ एब्सोल्यूट, मैं फिर से एक बात वो दोबारा रिपीट करना चाहूँगी दैट पीपल जस्ट नीड टू गेट कम्फर्टेबल विद द फैक्ट ऑफ व्हाट achievements and success are, so that you know people are more peaceful, and I think we need that in Pakistan, especially more peace. Yeah.